Hi, I'm Dr. Suranjana Basak, consultant neurologist with Medicover Hospital, Navi Mumbai. So, what happens to your brain if you don't sleep the entire night is a very, very important question, and it is something that bothers all of us because we are all working morning to night. Sometimes we keep our schedule so busy that we don't even get to sleep for more than 4 or 6 hours at night. The thing is that your brain goes into a rest mode at night. Just like you need to charge your mobile phones and you need to connect it, make sure that your battery is 100% before you use it. कभी कभार अगर आपने आपके फ़ोन को 4% पे या 10% पे या 20% पे चार्जिंग प्लग से डिस्कनेक्ट कर दिया, व्हाट विल हैपन टू योर फोन? कुछ देर यूज़ हुआ, जितना चार्ज किया उतना यूज़ हुआ, बाकी फिर ड्रेन हो गया एंड देन देयर इज नो पॉइंट, वो फ़ोन काम नहीं करेगा, आप फिर से चार्ज करने के लिए लग जाओगे. Similarly, your brain needs to be charged and that charging time is when you're sleeping. So sleep में पहला 1 घंटा होता है जब आप बस sleep phase में जा रहे हो, आपकी हल्की हल्की नींद होती है. Then for the next 2 to 3 hours is the most important time of your sleep because उस time your brain is filtering all of the waste out. ठीक है, जब आप कुछ भी खाना पीना खाते हो, you know that your body goes through normal bowel movements, urinary movements, but what about the brain? जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो कहाँ से चले जाते हैं, या जो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, राइट? द ब्रेन ऑल्सो हैज अ डिफरेंट लेयर अराउंड इट एंड दैट लेयर फिल्टर्स all of your waste products of the brain out. This happens only when you sleep at night, especially 1 to 2 hours into sleep. It does not happen immediately. So which is why you need to at least ensure 4 to 6 hours of proper sleep at least. 4 hours is less. 6 hours हम कहते हैं for an average adult is the normal sleep duration that is required. For children it is almost 8 hours. So if you don't sleep well, next morning आप चिड़चिड़े उठते हो, you're not able to focus, you can't concentrate, your body is paining, your back is paining, अरे ये हो रहा है, अरे गर्दन दर्द हो रहा है, you're constantly on your phone like this, you're constantly on the computer like this, there's strain around your neck. So आप आपके brain को उतना importance दे ही नहीं रहे हो, you're just thinking that everything is working on an autopilot mode. So to ensure that you function well, that your system works well next day, you need to ensure a good amount of sleep. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मास्टर ऑर्गन है आपका ब्रेन. कहीं भी किसी भी ऑर्गन को किस तरह से काम करना है, हार्ट को बराबर काम करना है कि नहीं, इंटेस्टाइन्स को बराबर डाइजेशन करना है कि नहीं, whether you're supposed to swallow the food, you're supposed to cough out, whether your hand is supposed to move, everything, whether your kidneys are supposed to work properly, your liver is supposed to function properly, everything is working or is working on the commands of your brain. So brain को अगर command देना है, if the main powerhouse of your body has to give a proper command, you need to make sure that that person is resting or that organ is resting well. So if you want to ensure कि आपका system, आपका overall body system अच्छा रहे, you need to ensure a good amount of sleep. Number 2, if you want to ensure that आपको अगले दिन aches, pains, mood disturbances, irritability, ये सब दिक्कतें ना आए, आप focus अच्छे से कर सके, you need to ensure a good amount of sleep. एंड लास्टली जो बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट्स तो आपकी बॉडी से निकलते रहते हैं पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू, मोशंस के थ्रू, बट जो ब्रेन का वेस्ट है दैट ऑल्सो हैज टू कम आउट एंड दैट हैपन्स ओनली एट नाइट स्लीप. एक सवाल आपके मन में आएगा कि दोपहर को सो लेंगे या दोपहर को नींद हो गई, दोपहर को 1 घंटा सो लिया तो चलेगा क्या? विल इट डू द सेम थिंग? नो, इट डज नॉट. Like I told you, it takes 1 to 2 hours before you go into deep sleep. Once you got into a deep sleep, ये काम सिर्फ तभी हो पाएगा. So make sure that you sleep well. Get good 6 hours of night sleep. इसके लिए एक चीज़ जो आपको करना चाहिए, अगर आप इंश्योर कर रहे हो कि आपको 6 घंटे की नींद चाहिए, उससे सोने के आधे घंटे पहले कीप योर फोन अवे. वो रात को जो रील स्क्रॉल एंड यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने की जो हमारी आदत हो जाती है बेड पे रहते रहते, यू हैव टू कट दैट डाउन because increased screen time, delayed sleep. So reduce your screen time, especially when you are in bed, and go off to sleep. अच्छे से relax करो, peaceful रहो, breathing पे focus करो, अच्छे thoughts लाने की कोशिश करो, so you go to sleep very well.